है कि संकाय इस कोविड पीरियड में भी अपने शिक्षण कार्य में और एक्टिविटीज में कंटिन्यू अनवरत प्रयत्न करता रहा और मूड कोर्ट, डिबेट, सेमिनार, इंटरनेशनल मूड कोर्ट, इस तरीके की करीब 4 दर्जन से अधिक इवेंट जो है संकाय कराने में सफल रहा। हमारा शिक्षक, हमारे छात्र बड़े ही एक्टिव हैं और बिना किसी आर्थिक सहायता के भी तरह तरह की जो है इवेंट कराते रहते हैं। डॉक्टर एलपी मिश्रा सर का सहयोग मुझे जहां तक याद है लंबे समय से संकाय पर बना रहता है, कृपा बनी रहती है और आप इस संकाय के लिए एक वरदान के रूप में साबित हुए हैं। आपसे जब भी कुछ अपेक्षा की गई है तो आपने सदैव अपेक्षा से अधिक सहयोग किया है। सर, आपका सहयोग, आप जो है आशीर्वाद इसी तरीके से वित्त संकाय पर बना रहे, हमारे छात्रों पर, हम पर, शिक्षकों पर, फैकल्टी पर, सभी पर। संकाय इसके लिए सदैव आजीवन जो है आपका आभारी रहेगा, ऋणी रहेगा। आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, इसके लिए आपका संकाय वंदन करता है, अभिनंदन करता है। इसी तरीके से आप कृपा बनाए रखें। आपके व्यक्तित्व को कौन नहीं जानता है। आप अपने व्यस्ततम समय में, आपके पास समझाते समय नहीं है, फिर भी इतना समय निकाला और आप आए, आपको बहुत बहुत आभार। बच्चों के लिए मैं यही कहूंगा कि जितने भी बच्चे इस इवेंट में, चाहे जिस इवेंट में पार्टिसिपेट किए हैं, सभी जो है उत्तम कोटि के हैं। कि हारना जीतना आपके हाथ में नहीं है। जिसने भी पार्टिसिपेट किया है वो सब जो है अच्छे बच्चे हैं, सर्वश्रेष्ठ बच्चे हैं। इसी तरीके से आप लोग यदि विश्वविद्यालयों द्वारा कराई गई इवेंट में पार्टिसिपेट करते रहे तो आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगेंगे, आप अपने जीवन में बहुत सफल रहेंगे। आप बड़े सपने देखिए और ईश्वर और उसके लिए प्रयास करिए। छोटे सपने मत देखिए, बड़े सपने देखिए। जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में प्रयास करिए कि हम मशहूर बनेंगे। हर बच्चे में कोई न कोई, हर व्यक्ति में कोई न कोई अच्छी क्वालिटी जरूर होती है। उस क्वालिटी को पहचानते हुए प्रयास करिए और आप जीवन में सफल रहेंगे। खाली सपने देखने से काम नहीं चलेगा, प्रयत्न करना आपका काम है। कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कारयाणिन मनोरथै न सुप्त सिंह से प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो सिंह को भी परिश्रम करना पड़ता है, तो एज ए स्टूडेंट आपको भी परिश्रम करना पड़ेगा। देखिए, विद्यार्थी को कभी सुख की, जब तक विद्यार्थी जीवन है तब तक सुख की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। डॉक्टर मिश्रा को मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you so much, sir, for always guiding us.
Now, I would request our Chief Guest Dr. L.P. Mishra sir, Advocate Allahabad High Court Lucknow Bench, to bless us with his kind words. Over to you, sir. Urmika ji, thank you. At the outset, good morning and Shubh Ram Navami to everybody joining this valedictory session. I am really grateful and thankful to Professor C.P. Singh, Dean Faculty of Law, Lucknow University, Professor Harish Chandra ji, the Organizing Secretary, Urmila ji, and all my near and dear students who are very purposefully, objectively, dedicatedly are being groomed, nurtured in this law faculty, which has got historical importance so far as the legal education in the country is concerned. I think this Lucknow University law faculty is one of the oldest law faculties of the country. I remember my days in 1967 when I joined as a law student. It was the first session when the 2 years LLB course was converted into 3 years. Then almost every week of not only law faculty but virtually every brick of Lucknow University itself used to roaringly and silently also take the name of Dr. R.U. Singh, the towering personality in whose memory you all have organized very purposeful and timely relevant seminars on the subjects which are very relevant for today. On elections, be it on COVID 19 and other subjects, I am told that, as Dr. Professor Singh told us all, that 4 dozens courses have been, or seminars or events have been organized during this COVID period when normally we could not dare to venture outside our homes. Organizing such events, particularly relating to academics, is of its own importance. I am really heartened to hear from Professor C.P. Singh that his students, law students, are so dedicatedly and objectively working towards their development in the field of academics. I used to say something that if karma is looked after properly, there is no dearth of success and achievements in life. In my perception, karma is the core of the development of a personality. And knowing the value of karma is basically taught by our teachers, our gurus, whom we revere. Because if whatever I look back, then I find that whatever I have today, that goes to our gurus who taught us in Lucknow University, who nurtured us. No one is good or bad. No child is bad, no child is good from birth. No student is good, no student is bad. It is our gurus who nurture, who develop, who teach, like a gardener, like a guardian, like parents and students so developed. Dr. Professor R.U. Singh, in whose memory you all have organized the events and in whose memory
And in furtherance of those events, today valedictory session is being organized. Valedictory session means a farewell session. On completion of something successful, we celebrate it as a valedictory day, valedictory session. Now, Dr. Professor Aryu Singh, as we all know, was Dean Faculty of Law in Lucknow University. He probably retired in the year 1956. He was not only a professor, head, and dean of law faculty, but he was such a personality who drafted the Constitution of Nepal. The University of Lucknow, in paying respect to him, named the Law Library of Law Department in the name of Dr. Aryu Singh Law Library, in which we used to, in our student life as a law student, we used to use spend our hours and hours. It was a very, at that point of time, it was a very rich library. There were two very rich libraries in the city of Lucknow, one in the Awadh Bar Station, High Court at Lucknow, and the other, Dr. Aryu Singh Law Library. Libraries are such places where from our students taking education, they derive knowledge. And therefore, the law library is to be developed to its fullness. At that point of time, in 1967-68, as I remember, even gazetteers used to come and used to be subscribed. It was so because it was Dr. Aryu Singh who started publishing two journals, namely the Federalist and the Indian Law. I would request Professor C.P. Singh and Professor Harish Chandra and you, my dear students, all to restart that, at least not if two, then one law journal should be published from the Department of Law of the Lucknow University. I am really very thankful that you all have invited me, and I wish you all, my dear students, to rise at a level where from there is no higher limits. उठो जितना ऊंचे उठा आसमां है. And but one thing, that whenever you wish great in life. Someone asked a person as to what he wants from life. He said, गुलशन में सरों, फौज में मिसले निशा रहें, आलम में सर बुलंद रहें, हम जहाँ रहें. Meaning thereby that if I happen to be in the garden, that I should be as tall as a palm tree is there. If I happen to be in the army, then I should be placed in the position of a flag marching the army ahead. And if I am in the masses, I should always remain with my head high. Therefore, I wish all my dear students, to rise to the maximum of your capacities, your abilities. Once again, I thank from bottom of my heart Professor C.P. Singh, Dean Faculty of Lucknow University, Professor Harish Chandra, the last but not the least, our dear students, and Urmiki Pandey, who personally took pains to come to me to invite me for this valedictory session. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir, for always inspiring us. Now, the time has arrived for which everyone is waiting for the result declaration of 5th Dr. Ayu Singh Memorial National Literary Event. Moving ahead with article writing competition, the winner of article writing competition is Swaraj Shukla and Arzu Nayab of Lucknow University. The runner-up for this competition is Pranav Kaushal of Bahara University. Now, for extempore competition, the winner is Varna Tiwari of Lucknow University, and the runner-up is Sumitra Dhal Saman of Lucknow University.
Now, for poster making competition, the winner is Priyanka Gupta of Lucknow University. The runner up is Sonia Kavade of Maharashtra National Law University. For bill drafting competition, the winner is Siddhant Bajpayee of City Academy Law College. The runner up is Rajat Kumar of Lucknow University. For legal quiz, the winner is Mimi Darshana of Tamil Nadu National Law University, and the runner-up is Ismat Zehra and team of Unity PG and Law College. For debate competition, the winner is Sakshi Rajoria and Ankita Chauhan of Banasthali University, and the runner-up is Aryan Mishra and team of Lucknow University. Thank you so much to every participants who participated and those who won. Now, I request Professor Harish Chandra sir to address the gathering with vote of thanks. Over to you, sir. नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। हमारे प्रेरणा स्रोत एलपी मिश्रा साहब और हमारे विद्यार्थियों के भी प्रेरणा स्रोत, क्योंकि हमको ये बात अलग से कहनी नहीं है, क्योंकि हम लोग उनके जो वक्तव्य सुने हैं, इन्होंने कर्म की बात की है और इन्होंने एक ऐसे संस्थान की बात की है जहाँ पे बच्चों को एक माली की तरह तैयार किया जाता है। माली के रूप में हम लोगों का कर्तव्य है कि उनको हर क्षेत्र में तैयार करें। विधि के उस क्षेत्र में जहाँ पे तरह-तरह के कार्य हैं जिसमें उनके ऊपर बिल ड्राफ्टिंग का भी काम आ सकता है। विधि पर परिचर्चा करने का भी योग्यता होनी चाहिए। विधि में न्याय देने का कार्य भी इन्हीं ऐसे ही विद्यार्थियों के ऊपर है। अब आप ये सोचिए कि जो ऐसे विधि देने का काम कर रहे हैं, जो बिल ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, वो ऐसे और ऐसे वो अपनी इसलिए डॉक्टर हमारे प्रेरणा स्रोत वास्तव में उन्होंने तब उन्होंने प्रेरणा को और हम लोग पुरानी यादों में चले गए। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, कर्म करने की बात इन्होंने कही है, जो कि हमेशा कर्म से ही व्यक्ति महान बनता है, ऊंचा बनता है। पूरा आसमान उसके लिए है जो कर्मयोगी है, जो काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त इनको हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे फैकल्टी ऑफ लॉ के डीन प्रोफेसर सीपी सिंह, हमेशा उनका हाथ ऐसे कार्यक्रमों में बहुत सहयोग के रूप में रहता है और उनका सहयोग हमेशा रहता है ऐसे जहाँ पे छात्रों के व्यक्तित्व का विकास की बात हो, हर क्षेत्र में उनका सहयोग रहता है और हर क्षेत्र में हमेशा तैयार रहते हैं। उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके अतिरिक्त जो इवेंट हुए हैं, जिसमें डिबेट है, बिल ड्राफ्टिंग है, लीगल क्विज है, पोस्टर मेकिंग है, इन जितने भी लिटरेरी इवेंट हुए हैं, जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट भाग लिए हैं और उन्होंने संघर्ष किया है, उन्होंने जो शुरुआत की है, हर शुरुआत उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत सहायक होता है। इसीलिए ऐसे लिटरेरी इवेंट का आयोजन किया जाता है, जिससे लोगों की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो सके। तो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, विनर हैं, उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद और जो पार्टिसिपेंट हैं, उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने प्रयास किया है और सफलता-असफलता जो मार्किंग होती है 1-2 नंबर से का अंतर होता है, बस और कोई बात नहीं होती है। ऐसा नहीं कि जो छात्र नहीं इस कॉम्पिटिशन में किसी स्थान पे आ पाए हैं, उनका कोई जो उनका प्रयास जो है असफल है। उनका प्रयास ये किसी काम का नहीं है, ऐसा नहीं है। उन्होंने प्रयास किया, उतनी पर्सनैलिटी उन्होंने डेवलप की है और जो प्रथम स्थान पे, द्वितीय स्थान पे आते हैं, वो केवल ऐसे थोड़ा-सा उन्होंने अच्छा कर दिया, बस और कोई बात नहीं है। तो हम सारे पार्टिसिपेंट को धन्यवाद देना चाहते हैं, जितने विनर उनको धन्यवाद देना चाहते हैं और हम लोग जो एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को
एक लीड कर रहे हैं। हम लोग ऐसे हमेशा कार्यक्रमों का आयोजन करते रहेंगे, जिससे कि जो हमारे विद्यार्थी हों हर क्षेत्र में हर क्षेत्र में काम करने के लायक बन सकें और बनेंगे ही, क्योंकि बिल ड्राफ्टिंग ये जो है बिल ड्राफ्टिंग का काम है पार्लियामेंट का, लेकिन पार्लियामेंट में रहेगा कौन? ऐसे ही लोग तो रहेंगे जो ऐसे। तो अब आपको आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। जो उर्मिला पांडे हैं इस कार्यक्रम को आगे लीड करती रहती हैं, उनको विशेष रूप से धन्यवाद। फिर से आप सभी लोगों को धन्यवाद। अब अपनी मैं Thank you so much, sir, for supporting us throughout this event. I'm also grateful to all the judges for different competition of this event, such as Dr. Radhesham Prasad, sir, Associate Professor, Faculty of Law, University of Lucknow, for judging the extempore competition. Mrs. Bandana Singh and Mr. Raghavendra Chaudhary, sir, for judging the preliminary round of debate competition, and Mr. Pranav Tripathi, sir, Civil Judge Junior Division, for judging the final round of debate competition. I'm thankful to our chief guest for providing us his valuable time. Last but not the least, our organizing committee members. Without them, this event won't be possible. At last, congratulations to everyone who participated enthusiastically in this competition. Thank you for joining us in this session. Thank you.